रुद्राक्ष जी। माननीय प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, आज संपूर्ण राष्ट्र भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान प्रदर्शित अदम्य साहस और पराक्रम के सम्मान में कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर हम अपने सशस्त्र बलों की वीरता, संकल्प शक्ति और प्रतिबद्धता को नमन करते हैं, जिन्होंने कारगिल के प्रतिकूल मौसम और दुर्गम इलाके में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय प्राप्त की है। ये सभा कारगिल युद्ध में शहीद हुए सशस्त्र बलों के सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें नमन करती है और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ओम शांति। प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर 81 श्री मलुक नागर। आप समझदार हैं, आप अनुभवी नेता हैं, 12 बजे लिया जाता है उसको। प्रश्न नंबर 81 के संसद में किस तरीके की बात करते हैं, आप समझाइए अपने सदस्यों को। नो गलत तरीका। क्वेश्चन नंबर 81 श्री मलुक नागर। मंत्री जी, प्रश्न नंबर 81 माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर जवाब रख दिया गया है। मलुक जी। सब मैं आज एक जो पहला प्रश्न लगा है उसमें मणिपुर से ऑटोमेटिक जुड़ जाता है और ये लोग मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं चाहते क्या? जो जूट की खेती है वो मणिपुर में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है, बिहार में भी होती है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जो एक्सपोर्ट होकर के पैसा देश में आया उसमें से कितना पैसा किसानों को दिया जा रहा है इंसेंटिव के रूप में? और दूसरा, सरकार क्या कर रही है जो जूट की खेती नई टेक्निक से पूरे देश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो ज्यादा बढ़ाई जा सके? आज का दिन हम सबके लिए भी बहुत गौरवान्वित है, क्योंकि आज ITPO का जो विश्व स्तर का जो एक एग्जीबिशन सेंटर का आज ओपनिंग करने प्रधानमंत्री जी गए थे और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ग्लोबल इमेज को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए हम सब ने कर्तव्य काल का निर्माण किया है और इस कर्तव्य काल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा योगदान जूट का भी रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि जो किसानों की बात ये कर रहे हैं, कल सबसे बड़ा किसानों के सम्मान निधि के रूप में प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उसके अकाउंट में जो पैसा जमा करने वाले हैं, इसमें इस बार MSP के माध्यम से जूट किसानों को 5,000 से ज्यादा की राशि ये तय की गई है। और इसके साथ में जो एक्सपोर्ट निर्यात की बात कर रही है, आज जो एग्जीबिशन सेंटर बना है जूट रिलेटेड, जो ग्लोबल इमेज में जूट का आगे बढ़ने के लिए जो टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज हो या उनसे जुड़ी हुई जो चीज बनती है उनके प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर से लेके उनकी खेती में कैसे बदलाव आए, किस तरह से नई टेक्निक से खेती हो जाए। मैं एक बात ध्यान में लाना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी जो चीज होती है इसमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए और उन्होंने जिस तरह से बताया है सबसे ज्यादा जूट मिल है वेस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल की जितनी भी मिलें हैं उनको सरकार ने प्रोक्योर करके जो हमारी चीनी और हमारी पेड़ी के लिए जो हमने जो जूट बैग है उनको सिक्योर नहीं किया होता
तो ये लोग इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसमें भी ये परेशानी है कि उनको जो सरकार के सहयोग मिलते उनके जो सहयोग मिलता है, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया, ना तो नई मिल को अपग्रेड किया, ना ही तो टेक्नोलॉजी करी। कैसे गोल्डन प्रकार का जूट बन जाए उसके लिए सोचा गया। तो इसमें हमें सीड से लेकर उनके कैसे 1 हेक्टेयर के अंदर सबसे ज्यादा उसकी खेती हो जाए, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, उसके मार्केट लिंकेज हो जाए, और मार्केट लिंकेज के साथ में एक्सपोर्ट तक की चीजें सरकार ने इसी योजना के माध्यम से बनाई है। तो जो एक्सपोर्ट आज हुआ है, उन्होंने जो सवाल पूछा है कि आज तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जूट का पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो हम लोगों ने तय किया है, तो उनका जूट के उत्पादन में 76 लाख बेल की तुलना में 2023 में 91 लाख बेल्स हो गया, और आज वर्तमान में 10,000 करोड़ रुपए की अधिक छूट जो तेलिया के लिए सरकार खाद्यान्न पदार्थ के लिए उनको दी जाती है। मलूक नागर जी, अब सीधा प्रश्न ये था कि जो एक्सपोर्ट होता है, जो इंसेंटिव सरकार देती है इस जूट की खेती बढ़ाने के लिए, सरकार ने किसान को क्या इंसेंटिव के रूप में दिया है? नंबर 1। नंबर दो कि क्या सरकार पूरे देश में जूट की खेती और खास करके मणिपुर में, जिससे वहां पैसा ज्यादा जाए और झगड़े बंद हो जाए, सरकार झगड़ों को भी कंट्रोल करे और आर्थिक रूप से भी मजबूत करे, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? और तीसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जूट की खेती कैसे ज्यादा हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इनकी लड़कियां होती है जो श्रमिकों की बालिका होती है, उनको 10वीं और परीक्षा पास करने के लिए 5,000 और 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए 10,000 रुपया की स्कॉलरशिप प्रदान की है। सरकार ने 21-23 के दौरान लगभग 8200 बालिका को 7,000 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान किया है। इसके अलावा टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, जियो टेक्सटाइल के लिए, जो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में उसका उपयोग होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे इंसेंटिव लिए हैं। PLI स्कीम के माध्यम से, जो पूरे ग्लोबल में जिसकी चर्चा है, जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन लिंकेज जो स्कीम है, इसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत सपोर्ट इंडस्ट्री को किया है। गोपाल मोदी सपोर्ट के साथ माध्यम से, एक्सपोर्ट के माध्यम से उनको एग्जीबिशन के लिए भी हम लोग भेजते हैं। लगभग 7,000 से ज्यादा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ में जूट को भी प्रदर्शनी में शामिल करते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने तय किया है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने, तो जूट को भी जो हमारे यहाँ ग्रीन एनवायरनमेंट की ओर आगे बढ़ते हुए हम उनको भी सहयोग प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 श्री अरविंद सावंत। क्वेश्चन नंबर 82 अरविंद सावंत। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 83 श्री अशोक कुमार रावत। क्वेश्चन नंबर 83। Statement is laid on the table of the House, sir. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने रेल संपार संख्या 249 को स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन इस विषय में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके निर्माण कार्य में काफी विलंब हो रहा है, क्या इसके शीघ्र पूर्ण करवाए जाने हेतु तो कोई निर्देश पारित करेंगे? सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, इनके क्षेत्र में 3 लेवल क्रॉसिंग्स है माननीय अध्यक्ष जी। लेवल क्रॉसिंग नंबर 247, लेवल क्रॉसिंग नंबर 248 और लेवल क्रॉसिंग नंबर 249, जो कि संडीला स्टेशन के आसपास है, तीनों के तीनों। LC 247 में कंस्ट्रक्शन फिजिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे दोनों तरफ बहुत ज्यादा बिल्ट अप एरिया है और क्रॉस रोड्स भी है अप्रोच एरिया में। LC 248 का टेक्निकल और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुका है और उस काम को आगे बढ़ाया गया है। LC 249 में कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था माननीय अध्यक्ष जी, और रेलवे ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर दिया है मई के 2022 में। उसके बाद में काम में थोड़ी सी कुछ और चेंज आया, चेंज होने के कारण अप्रोच पोर्शन का कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया और इस पूरे के पूरे काम को टेंडर अवार्ड कर दिया गया है। काम तेजी से चल रहा है।
धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं दूसरा पूरक प्रश्न जानना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में बालामऊ रेलवे स्टेशन लेवल क्रॉसिंग 257 है, जिसमें अंडरपास के लिए फाइल लंबित पड़ी हुई है रेल मंत्रालय में, और उसी के साथ ही 258 की लेवल क्रॉसिंग है जिस पर रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 257 के रेलवे अंडरब्रिज और 258 के रेलवे ओवरब्रिज की आगे की प्रक्रिया में अविलंब प्रारंभ किए जाने हेतु कोई निर्देश देंगे? मान्यवर सांसद महोदय का सजेशन नोट किया गया सर, और मैं मान्यवर सांसद से निवेदन करूंगा कभी भी कार्यालय में बैठ के उसका कंप्लीट रिव्यू हम लोग कर लेंगे। Now, Sri Krishna. With respect to the RUBs, road underbridges, there is a huge problem, mainly in the rainy season, sir. There's a lot of water logging that is happening for almost 6 months a year, sir, and because of that, farmers are not able to access their fields for 6 months a year, sir. And this has been raised by not just by me, sir, but most of the members in the House repeated times, sir. So I request the Minister to give some clarity on this issue so that there's a technical there needs to be a new design that has to be come up with the RUBs, sir. So I request the Minister to give what is the new design that are coming up so that this water logging problem can be taken off, sir. Thank you very much. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है और इसके बारे में मैं थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे के अंडरपासेस में पानी की जो समस्या है उसके लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं। उन स्टेप्स में 3-4 स्टेप है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो अंडरपासेस के डिजाइन में जो जॉइंट होते थे, उन जॉइंट के ऊपर एक अलग से जैकेटिंग करके उसको 18 जॉइंट को रोका गया है। दूसरा, जो रिटेनिंग वॉल होती थी उसमें वी पोल्स होते थे, तो उस वी पोल्स को बंद किया गया है। तीसरा, बहुत सारी जगह जो अप्रोच रोड है उसके ऊपर एक कवर्ड शेड बनाया गया है। चौथा, जितनी भी अप्रोच वाला एरिया है उसमें कंक्रीट गार्ड वॉल बनाई गई है जिससे कि साइड का पानी नहीं आए। पांचवा, जो अप्रोच है रोड उसकी ग्रेडियंट को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर किया गया है और इस तरह से किया गया है जिससे कि ग्रेडियंट पहले ऊपर जाए उसके बाद में नीचे रहे। छठा, बहुत सारी जगह जो हमारे अंडरपासेस हैं, अंडरपासेस में सम्प क्रिएट किया गया है जिस सम्प से मोटर लगाई गई है ताकि पानी को बाहर पंप आउट किया जाए। सातवां, बहुत सारी जगह क्रॉस ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, करीब 1900 ऐसे अंडरपासेस हैं जिसमें रिपेयर करके आज परिस्थिति पहले से बेहतर है। सदस्यगण, आप चर्चा नहीं करना चाहते, मणिपुर पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की मर्यादा बना के रखो। सदन में बात या चर्चा के लिए अच्छा हो, आप अपने अपनी शासन पर बैठे हैं। हर विषय, हर मुद्दे पर चर्चाएं कराई जाएगी। ये सदन चर्चाओं के लिए है। आप चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलना चाहते, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, आज संपूर्ण राष्ट्र भारतीय सशस्त्र बलों members have demanded discussion on the ongoing situation of violence and unrest in Manipur. In this regard, honorable members would recall
that on 20th of July 2023, I have already imparted a ruling that the notices for short duration discussion received regarding the violence in Manipur are admitted, and the leader of the House, Piyush Goyal, had agreed for discussion on the issue. Since a similar notice has already been agreed for discussion by government, the notices received under Rule 267 are misconceived. Moreover, none of the notices fulfill the mandate of Rule 267 or are in conformity with the ruling imparted by me on 8th December 2022. In view of the same, I am unable to persuade myself to allow these notices. Honorable members, please. 3 notices under Rule 176 for short duration discussion have been received. The same are Sri Ghanshyam Tiwari, concern over assault on Sri Rajendra Singh Gudha, member of Rajasthan Legislative Assembly. Wait for my decision, what I do to them. I am only indicating what the honorable member has raised. Be fully confident, I'll deal with it. Dr. M. Thambi Durai, concern over rising prices of daily essential commodities. Sri C. Sanmugam, concern over breakdown of rule of law in the state of Tamil Nadu. Honorable members, in addition, I have received a representation from following members: Srimati S. Fan Ganon Konyak, Sri Ravangra Narjari, Sri Pavitra Margareta, Sri Kamakhya Prasad Tasa, Sri Bhuvaneswar Kalita, Sri K. Van Lal Vena, Sri Ishe Lachungpa, Dr. Van Veirai Khadlukhi, Sri Viplab Kumar Dev, Sri Maharaj Sanaja Obali Simba, Sri Nabab Rebia, Sri Birendra Prasad Bash. They have given me a notice invoking Rule 176 stating, I quote, "We all the members of Rajya Sabha from Northeast earnestly request you to please include in the list of business of the House a short duration discussion on situation arising out of recent incidents in Manipur and steps taken in respect thereof under Rule 176 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajya Sabha at the earliest. Government of India and state government have also taken so many steps to bring normalcy and restore peace in the state. All of India, including us, want the people of Manipur should feel safe and be part of development path India, and therefore there is urgent need for discussion on the subject in the House so that members from across party lines can participate in the debate and give constructive suggestions for tackling the situation prevailing in Manipur, which will boost the confidence of the people of Manipur. Sir, you have already given in principle approval for short duration discussion on this subject. Government has also categorically stated that they are ready for discussion on this subject as per rules and convenience of Honorable Chairman of the House. In the above backdrop, we sincerely request you to please allow short duration discussion on this subject under Rule 176 at the earliest without any further delay, keeping urgency. Honorable members, I have already admitted notice. Honorable members, please take. Honorable members, I have already admitted notices for short duration discussion under Rule 176 on the issue of Manipur, and Leader of the House
has also conveyed government's willingness for such discussion. After discussion with Leader of the House, as per requirement under Rule 177, I will fix date and time for short duration discussion. Okay, sit down. Honorable Finance Minister, I'll come to you. Given me the time. Please, please. Please, take your So seat. I'm grateful you've given me the time. I'll come to you. I'll come to you. Sir, Honorable I'm Finance grateful Minister. you've given me the time. I'm astonished to hear. I'm astonished to hear a member of this house call other members of this house dhokebaz. It should be removed and the honorable member should apologize. The honorable member should apologize. The honorable member should apologize. No way. This house cannot see this. Please, one second. Let there be order in the house. Mr. Tiruchi Siva. Let there be order in the house. Sir, Please. Nothing will go on record except what Mr. Tiruchi Siva says. Please, go ahead. And please. sir, Rule 235, sir. 1 second, sir. Give me a moment. Rule 235. Yes, sir. 35. Yes, sir. Sir, while the council is sitting, No, sir. Before reading the rule, tell me what is your point of order in substance. I shall, sir, Okay, go after ahead. reading the rule, I will tell you, sir. A member shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner. Sir, in the parliamentary democracy, sir, the leader of the house and the leader of opposition command a very big respect, sir. And whenever the leader of opposition or the leader of the house stands up, everyone will be silent listening to them. And our leader of opposition, Honorable Mallikarjun Kharge, yesterday, sir, two incidents happened. When he was speaking, he was now and then interrupted by the leader of the house, none other than the leader of the house and other members. He was not able to convey what he is your wanted point to. of- Number what- two, sir. what is your point of order? Number two, sir. Number two. Number two. Number two, sir. Number two, sir. Unprecedentedly, whilst the floor was given to him and when he was speaking, his mic was switched off. Sir, it really against House has to be enlightened. House has to be enlightened. How it happened? Why it happened? Never has it happened in the past. Honorable that the member. leader of opposition's mic has been switched off, sir. Sir, we have to be enlightened. How it happened? Why it happened, sir? Please take your seat. Now, 1 second. Mr. Tiruchi Siva, you read a rule. The rule is very significant. And did you see its violation? From this side, from this side. Was there not violation? Everyone interrupted you. Just imagine, introspect. We are reading a rule that says we'll maintain decorum. There will be no interruptions. Number one. Number two, with full sense of responsibility, after getting all inputs from the deputy chairperson, a man of high caliber and integrity, there was no mic off. Once again. There was, one second. Mr. Siva, what is this? You said no interruption. You are interrupting even the chairman. But why? Take your seat. What is your seat? Your seat. Please take your seat. Sir, take your seat.
You have no right to speak unless you are on your seat. Sir, you must know simple thing. You have no right unless you are on your seat. If you are not in your seat, you are committing a misconduct which is actionable. You are not on your seat. You are, sir, I am pained to indicate you are not on your seat. Are you on your seat? Are you on your seat? Why don't you go to the basic of rules? Are we required to tell you ABCD of parliamentary decorum? Go to your seat. First, go to your seat. Or are you forcing me to see that you go to your seat? No. Professor, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take. Take your seat. Then I'll come. Would you kindly take your seat? There is already, yes. Sir, मैं rule. Sir, what is your point of order? Sir, rule book 228, sir. Which rule? 228, sir. 228. Okay. सर, जब इस हाउस में आपने 176 पे रूलिंग दे दी, सदन चलना चाहिए, और लिखा हुआ है 228 में कि एक बार सब्सटेंशियल किसी सब्जेक्ट को स्वीकार कर लिया जाता है तो दोबारा से उस पर दूसरा नोटिस नहीं दिया जा सकता, लेकिन विपक्ष जानबूझ करके इस सत्र के इसको बर्बाद कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा है, सत्र नहीं चलने दे रहा है। और सर, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने विषय उठाया है, गलत अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, सीधे सीधे सदन की भी अवमानना कर रहा है, सदस्यों की भी अवमानना। I will give opportunity to everyone, but please don't interrupt. Dr. Keshav. Please. And leader of the opposition. But sir, before you say, honorable members, honorable members are I will give floor to the honorable leader of opposition. I seek cooperation from everyone in the house. I expect the honorable members to at least observe minimally what has been indicated by Mr. Tiruchi Siva while reading Rule 235, not to intervene. The minimum we can do is maintain decorum. And in parliamentary democracy, every member of parliament enjoys the same position, but by virtue of constitutional assignments, leader of the house and leader of the opposition are at a higher level because they are there in representative capacity also, apart from their individual capacity. Before the honorable, before the honorable leader of opposition takes the floor, let me tell you, two things were widely reported in media. One was mic of leader of opposition was put off. And the second was that emanated from another member of parliament, extensively quoted, that a member was suspended for raising an issue. With full sense of responsibility and deep anguish, the suspension of the member was not because the member raised an issue. The suspension was because, take your seat, because the member committed misconduct, indecorous behavior. No one is suspended in this house for raising an issue. We cannot allow this kind of things. It is plain and simple breach of privilege. Putting it in public domain that this house suspended a member
because the member was trying to raise an issue. This is unpardonable. This is an aggravated form of breach of privilege. This is giving impression to the people at large. Such an action has to be visited with exemplary consequences. And I have checked with the deputy chairperson. Floor was given to the leader of the opposition. Leader of the opposition was at a time when there was discussion on a legislative business. Any transgression that takes place away from the main theme, everyone in the house is aware that can't be allowed. And that is, at that stage, the Honorable Deputy Chairperson intervened. So it is not that mics were put off. It means the indulgence accorded by the chair to a particular member to focus on the issue which is subject matter of discussion. And if the honorable member transgresses it, goes into another domain, that surely can't be allowed. So please, I indicate leader of the opposition, only leader of the opposition, leader of the opposition, leader of the opposition. Sir, please take your seat, leader of the, honorable leader of the opposition. I expect everyone to lend your ears to leader of the opposition. धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने मुझे समय दिया और अब चालू है माइक। तो एक बात यहाँ पर बोलना ठीक रहेगा, जो शिवा ने उठाया था और वो 235 rules to be observed in council, उसके बाद 236 members were entitled to speak. तो मैं कल यहाँ पर डिप्टी लीडर थे, डिप्टी चेयरमैन थे, तो मैं उनके परमिशन पूछा तो उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि उधर हमेशा जब लीडर ऑफ द हाउस उठते हैं तो फौरन उनको मिल जाता है। हमको जरा हाथ उठा के तंग होने के बाद जब आप इधर घूमते हो उस वक्त मिलता है। लेकिन जब मेरे को परमिशन मिला बात करने का और आपके वजह से मुझे बात करने का अवसर भी मिला, और मुझे ये खुशी भी है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि इस सदन में मैं 4 लोगों का गौरव बहुत करता हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरे लीडर ऑफ द हाउस और तीसरे अपोजिशन लीडर। आपने बार बार कहा, एक सेकंड, मैंने कहा था ऑनरेबल मेंबर सर, बोल के I had indicated, one second, only minor correction, I had indicated, honorable members, I had indicated to the honorable members when I occupied this chair that every member of parliament in this house occupies a distinct position and all are equal. But 4 persons who are present here, with respect to them, I will first listen to them and then look at the rule book. And those 4 honorable members were Leader of the Council of States, he is a part of this house, Leader of the Opposition, and 2 former Prime Ministers we have. For other members, they have the same right, but they have a slight different approach in the sense that I will not ask Mr. Khadge, Leader of the Opposition, surrender which rule. I will hear him and then go to the rule. For others, I will say which rule. So that's and the House, I'm happy to say, agreed at that point of time. So sir, not the Prime Minister, the 4 were of this House. तो आप मेरे इसीलिए मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे
अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा सर डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. The house is not in order. No, sir. Please sit. Sir, 1 second. I appeal to the honorable leader of the opposition to take seat. Nothing will go on record is my directive. I have directed house not being in order. Nothing will go on record. Take your seats. Take your seat. I request the honorable members to first take your seat. Take your seat. First, let the house be in order first. Take your seat. Take your seat. Take your seat. That is under directive. I said so. I said so. Take your seat. 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 Take it. Would you all, one second, Mr. Chidambaram, take your seat. Take your. Honorable members, may I request you all to please take your seat. Take your seat. पहले take your seat. मेरी ओन है. मिस्टर सुरजेवाला, करूँगा, आप एक बार बैठिए सीट पे जाइए. Honorable members, Mr. Surjewala, if you think you can make a point beyond what LOP can make, I can tell you, you are mistaken. Can't you believe in your LOP? No. Can't you believe in your leader of the opposition? He's on the floor. Why don't you take your seat? Why don't you all go to your seat? No. First, take your seat. Please, you know it, nothing is going on record. Why use lung power? Let the leader of the opposition. No. Which power? Sir. Then. Okay. Nothing is going on record. Please take your seat first. I'll tell you. Oh, one second. I had given floor. Honorable members, please take your seat. It's not a laughing matter, Mr. Jairam Smith. What is this? You have forgotten where you are. You are in the house. We are transacting serious business. Now please take your seat. Take your seat and resume. Honorable members, वो तो तब से पीछे बैठे ही नहीं. आपके देखिए, आपके पीछे सब खड़े हैं. अब आई एम हैप्पी कि मेरे पीछे खड़े अगर नहीं हुआ तो क्या मोदी के पीछे खड़े होगा? Nothing goes on record.
Take your seat. Thank you. Silence. Please maintain decorum. Honorable members, I request Leader of the House and Leader of Opposition to generate discipline and decorum in their members. Please take your seat. All of you take your seat. Take your seat. Take your seat.